औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study the isotopes of different elements. Let's start from the isotopes of carbon. Carbon has three isotopes: carbon 12, carbon 13 and carbon 14. When we see the occurrence, carbon 12 is present 98.8%, carbon 13 is present 1.1%, and carbon 14 is present 0.009%. If we look at the carbon 12, it has 6 protons and 6 neutrons. Carbon 13 has 6 protons and 7 neutrons. Carbon 14 has 6 protons and 8 neutrons. The isotopes of carbon have black or greyish black color except diamond, because the color of diamond is not greyish black. Now we move towards the isotopes of chlorine. Chlorine has two isotopes. One is chlorine 35 and the second one is chlorine 37. Chlorine 35 is present almost 75% and chlorine 37 is present almost 25%. The chlorine 35 has 17 protons and 18 neutrons, while chlorine 37 has 7 protons and 20 neutrons. Chlorine is a gas. It has greyish yellow color. It has irritating smell and it is fairly soluble in water. Now we move towards the isotopes of uranium. Uranium has three isotopes: uranium 234, uranium 235 and uranium 238. If we see the occurrence or percentage of different isotopes, uranium 234 is present 0.006%, uranium 235 is present 0.72%, while uranium 238 is 99.27% of the total uranium. So if we see the uranium isotopes, uranium 234 has 92 protons and 142 neutrons. Uranium 235 has 92 protons and 143 neutrons. Uranium 238 has 92 protons and 146 neutrons. Uranium 234 is used to make nuclear weapons, while uranium 235 and uranium 238 have their role in energy production or power generation. So let us see the decay of uranium 235. When neutrons are bombarded on uranium 235, it is broken into barium 139 and krypton 94. As well as during this fission process, a huge amount of energy is produced. Dear students, it is believed that if 1 kg of uranium 235 is broken, it produces the energy which would be equal to the energy produced by the burning of 17,000 kilogram of coal. प्यारे बच्चों,
अगर हम 17,000 किलोग्राम कोयला जलाएं और उससे जितनी एनर्जी निकलेगी तो यूरेनियम 235 के 1 kg के फिशन से भी उतनी ही एनर्जी ऑलमोस्ट निकलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार प्रोड्यूस होती है बाय द फिशन ऑफ यूरेनियम 235। अच्छा, इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है स्टीम की प्रोडक्शन के लिए। इस स्टीम से फिर टरबाइन्स वगैरह चलाई जाती हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो कहा जाता है कि ये यूरेनियम का पीसफुल यूज़ है। इसी तरह यूरेनियम 238 का डीके अगर हम देखें तो यूरेनियम 238 इज़ ब्रोकन इनटू थोरियम 234 as well as alpha particles are produced. Uranium 238 is used in radiometric dating। प्यारे बच्चों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है वो डिफरेंट जियोलॉजिकल सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिजम्स की, बहुत पहले जो ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद थे जिनकी एज का हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, तो यूरेनियम 238 को यूज़ करके हम उनकी एज डिटरमिन कर सकते हैं। ये कुछ यूरेनियम के यूज़ थे, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के। यहाँ पर हमारा आइसोटोप्स वाला टॉपिक कंक्लूड होता है। एक बार फिर अपनी सहूलत के लिए देख लें। सबसे पहले हमने देखे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 98.8%, कार्बन 13 1.1%, कार्बन 14 0.09%। कार्बन 12 has 6 protons, 6 neutrons, कार्बन 13 has 6 protons, 7 neutrons, and कार्बन 14 has 6 protons and 8 neutrons. If we talk about the isotopes of chlorine, chlorine has 2 isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. Chlorine 35 is present 75%, chlorine 37 is present 25%. Chlorine 35 has 17 protons and 18 neutrons. Chlorine 37 has 17 protons and 20 neutrons. Now see the isotopes of uranium. Uranium has 3 isotopes: uranium 234, uranium 235, uranium 238. Uranium 234 is present 0.006%, uranium 235 is present 0.72%, while uranium 238 is present 99.27%. If we see the different isotopes of uranium, uranium 234 contains 92 protons and 142 neutrons. Uranium 235 has 92 protons and 143 neutrons. While in uranium 238 92 protons are present and 146 neutrons are present. Uranium 235 is broken into barium and krypton and produces a huge amount of energy which is used to generate electricity. Uranium 238 is decayed into thorium and alpha particles, and uranium 238 is used in radiometric dating, while uranium 234 is used in the production of nuclear weapons. Thank you very much.